Good evening to students. Today we discuss the topic metabolism of nitrogen, or we can say it is nitrogen metabolism. So in this we discuss this nitrogen metabolism. This nitrogen metabolism is completed into two parts. One is nitrogen cycle and another one is biological nitrogen fixation. So one nitrogen cycle and another is biological nitrogen fixation. Firstly, we discuss nitrogen cycle. In enormous atmosphere, nitrogen is present in 78%. But this 78% cannot be utilized by animals and plants. For this nitrogen use, nitrogen get fixed into other forms. For this nitrogen fixation, we use two criteria, like some agencies which fix this nitrogen into other forms which can be usable for animals and plants. So we discuss the agencies by which nitrogen get fixed. One is abiological, nitrogen fixation, or this is physical. Physical nitrogen fixation. And another is biological nitrogen fixation. Why this nitrogen is required? Nitrogen is required because it is most abundant elements for plants and animals, because it is used in metabolic processes in animals and plants. तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ पे यूज होता है, उसके बाद हम इसके बारे में, इसके नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बातचीत करेंगे. तो नाइट्रोजन जो है वो किन किन के कंपोनेंट के अंदर यूज होता है उनके बारे में बात करते हैं. सो नाइट्रोजन इज ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ
constituents of first some coenzymes like FAD, NAD, H, and some proteins like glute, collagen, hormones, like insulin, glucagon, chlorophyll, and amino acids and some vitamins like vitamin A, C, vitamin B12 and so on. तो इन सब के अंदर नाइट्रोजन जो है वो यूज होता है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करने के लिए इतनी सारी एजेंसीज जो है वो यूज होती है। सबसे पहले हम फिजिकल एजेंसीज की बात करेंगे या एबायोलॉजिकल एजेंसीज जिनके द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, जो कि मेनली एटमॉस्फेयर में ही हो जाता है। नाइट्रोजन जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है N2 की फॉर्म में, और ये N2 जो है इन फॉर्म ऑफ N2, दिस N2 joined by another N by triple bond to nitrogen atoms get joined by triple covalent bond. Covalent bond. This covalent bond is most important because this nitrogen is triply covalent bond with another nitrogen, because nitrogen's first cell, that is K cell, have 2 electrons and L cell have 5 electrons, और इस L सेल के अंदर इसकी 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी जो है वो खाली रहती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन के साथ
बॉन्डिंग कर लेता है, कोवलेंटली शेयरिंग कर लेता है। और इसकी वजह से ये इनर्ट नाइट्रोजन की फॉर्म में आ जाता है। सो N2 इज inert gas. Now this nitrogen is fixed in soil by some nitrifying bacteria. So plants and soil microbes compete with each other for this nitrogen present in soil. Firstly, we discuss abiological nitrogen fixation. और physical process of nitrogen fixation. फिजिकल प्रोसेस जो है वो एनवायरनमेंट में ही हो जाता है जब बहुत ज्यादा हैवी लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट करते हैं तो उसके थ्रू नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइटनिंग के थ्रू और थंडरिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में बात करते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ nitrogen get converted in nitrogen oxides. Example like NO, N2O, nitrogen monoxide, nitrous oxide, and NO2, nitrogen dioxide. These are oxides of nitrogen. अब हम बात करते हैं और सोर्सेज जिनके द्वारा नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि लाइटनिंग के अलावा और प्रोसेसेस। लाइटनिंग के बाद जब नाइट्रोजन जो है फिक्स हो जाती है, बारिश जब होगी, जब रेन होगी, तो उस टाइम पे ये नाइट्रोजन जो है फिक्स होके वाटर के साथ डिसॉल्व होके और अर्थ पे आ जाती है, सॉइल के अंदर ये इंक्लूड हो जाती है और उसको फिर प्लांट और माइक्रोब्स जो है वो यूज कर लेते हैं। और आर्टिफिशियली जब भी हम नाइट्रोजन को मैन्युफैक्चर करते हैं यूरिया की फॉर्म में, तो उस टाइम हमें उसके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके थ्रू ये नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाती है इन फॉर्म ऑफ यूरिया। अब हम बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और कौन कौन होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल कंबशन, फर्स्ट अदर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड।
नाइट्रोजन फर्स्ट is industrial combustion. Combustion. Second is forest fire. Third is automobile exhaust. And fourth is power generating stations. पावर जनरेटिंग स्टेशंस. इसके बाद हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो है इन सोर्सेज के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर.